Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to yet another episode of the Dental Talk. Today we have a very special guest with us here today. Today we have Dr. Abdul Samad Khan with us here today. Not many of you might be familiar with him because he works in Saudi Arabia, but he's worked as the president of the Pakistan Association of Dental Research. He completed his BDS in between 1995 to 1999. He then went for his masters, his MSc, to the Queen Mary University of London in dental materials, and then he completed his PhD from the Queen Mary University of London between 2005 to 2009. He worked in UK for a while, and then he moved back to Pakistan, where he worked at the ComSat's Institute of Information and Technology between 2011 to 2016, where he established the first ever dental materials research center in Pakistan. He then moved on and became an associate professor at the College of Dentistry at the Imam Abdulrahman bin Faisal University, and he's been working there full time for the past 6 years. He holds key research interests in the field of dental materials, such as characterization of natural tissues and optimizing the surface chemistry of the materials, and many others. I could go on about all of his achievements and all of his articles, but I think we'll just talk to Dr. Abdul Samad Khan first, and then he can tell us more about his research interests as well. Thank you so much, sir, for joining us. And thank you so much for taking time out just a few days before Eid. It means a lot to me. How are you? Thank you very much. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to viewers. Thank you very much. It's a pleasure for me because I've been following this your podcast. Oh, I know, yes, because this dental talk, and I think it's a very great initiative. I think you're doing it. You've been doing it like for the last 2 years. I think so. absolutely, sir. Absolutely. 2.5. So Yeah. so I think it's a great work, and I'm sure maybe people they can get benefit out of it, and Yeah. they have already taken it because I saw some interviews of local or Yes. Pakistani faculty members, and as well as like from the international or the foreign National as well. Yes. faculty members. I think it would be beneficial for our young graduates, obviously. Absolutely. So I'm here for you. Thank you, So sir. whatever you ask. With your permission, sir, should we start with the questions? Yes, sure. All right, sir. Sir, tell us a bit about, let's take you a bit back in time, थोड़ा पीछे जाते हैं. Tell us about how you got into dentistry. Dentistry में आप आए कैसे, and how were those 4 years at Nishtar like for you? All right. Okay. How I entered into dentistry. Well, you want to listen the truth? Yes, sir. बिल्कुल सच बताएं. सब. All right. Okay. So let me tell you, because I didn't have any interest in medicine and dentistry. Okay. Okay. I didn't want to be a doctor. Okay. Like just to be very clear. Yeah. Because I wanted to do something else. Absolutely. Right. At that time, many things were in my mind. I wanted to be a genetic engineer, actually. Oh, wow. Right? Yes. I remember like when I did my FSC, I did my FSC from Islamabad. So at that time, I wanted to be a genetic engineer, right? But my interest was related to animal side, right? And then I searched a lot about it. At that time in Pakistan, there were two centers. One was in, I think still they are working, is in Faisalabad, and the other was in Karachi. Okay, but in Faisalabad, it's Nayab and Nibji Center. They are under the umbrella of Pakistan Atomic Energy Commission. Okay. They were working only for plants. They were not working on animals. Okay. But in Karachi University, they were working on animals genetic engineering. But I don't know if you remember, you were born at that time or not. But in mid-90s, the condition of Karachi was not very feasible, right? पर अभी भी ऐसी कोई feasible हालात नहीं है कराची के. लेकिन I don't want to go in that detail. लेकिन उस वक्त जो रोज अखबार में खबरें आती थी और जो रोज की कंडीशन थी ना, वो that was very bad. So that's why my parents, they refused. You cannot go to Karachi, right? So I was a bit like, though I got the numbers to get the admission in dentistry, just with 1 mark difference, I couldn't get admission in medicine. But then why I entered in dentistry? Because I wanted to live in a hostel. Oh, okay.
Right. The moment I received the letter that I got an admission in Nishtar Medical University, at that time it was Nishtar Medical College, Hmm. right? And I didn't know about anything about Multan or Nishtar. Yeah. But the only charm for me at that time was that it will be, or it would be, the hostel life. Hostel life. So All right. that's why I entered into dentistry. But Understand. like for my 4 year journey in dentistry, to be honest, I feel lucky, and at that time I felt lucky that I got admission in Ishtar. There was life was full of anything, right? Mm. And in dentistry, related to education wise, we got some good teachers. Mm. Some were just okay. So it was not a very ideal Mm. education system, to be Yeah. honest. Okay. Okay, um, there were multiple reasons. Yes. Multiple reasons. Obviously, sir. Uh, Yes, but we get like whatever we received, it was okay. We luckily we got some very nice seniors, to be honest, and still I believe like for a undergrad level in Pakistan, for second year or third year student, the best teacher is your seniors, like those who Absolutely. are house Absolutely. officers especially. Yeah. And we were lucky, like there were some very nice and very cooperative seniors who taught us actually, right? And that's how like my journey Perfect. like Perfect. in Nishta it went like this. All right, sir. So आपने BDS कर लिया from Nishtar, and then you went on to do your MSc in Dental Materials from the Queen Mary University of London. Now, firstly, तो आप ये बताइए, Queen Mary University is a very good university. Even right now, it's considered one of the best universities in the world. How was that experience for you as a young dentist to move to the UK and study abroad? How was that experience, and why did you specifically choose Dental Materials? Okay, देखिए, it took me almost 5 years Yeah. to get admission in Queen Mary. The reason, because after my graduation I came back to Islamabad, so I did my house job from Islamabad. अच्छा, उस वक्त होता ही है कि जिस तरह आई डोंट नो अभी भी यही परसेप्शन है कि नहीं, लेकिन जो भी यंग ग्रेजुएट होता है स्पेशली डेंटिस्ट्री में, वट एवर दे वांट, दे आइदर दे वांट टू गो इनटू क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, Mm-hmm. राइट? दे वांट टू बी एंडोडोंटिस्ट, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, ऑर्थोडोंटिस्ट, लाइक क्लिनिकल सब्जेक्ट की तरफ Yes, yes. हमेशा से एक ट्रेंड रहा है. So that was my like interest as well. After dentistry, okay, I wanted to be an endodontist. I said, okay, it's an interesting field. But when I explored the clinical dentistry, okay, one more thing, I was very clear right after my graduation. Mm-hmm. Right after my graduation, I was very much clear कि मैंने अब पाकिस्तान से डिग्री नहीं करनी. Mm-hmm. Okay. Whatever the reasons, okay, because there were a few things which I observed, and we went through at an undergrad level, and we observed the education system of Mm-hmm. Pakistan. So Understandable. I decided right after my graduation, okay, I would not do any post graduation from Pakistan. Okay. Okay, and I think it was a good decision. Okay. Still, after 25 years, I Yeah. still feel that I think I took the Absolutely. right decision. So I searched the clinical subjects. Okay, at that time Google was not very much informative because it was also the Yeah. beginning of Google as Yeah. well. So, but we tried to search the different universities in UK, USA, Canada, Australia. One more thing, at that time in the PMDC, the rule was that if you have degree only from these four countries, then Mm-hmm. it is fine. But if you get a degree from any other country, then if you come back, Yeah. so you have to take the exam of PMDC, which was another thing. You Yeah. know, Okay. there were so many political things involved in Understood. that. So that's why whatever at that time I searched only UK universities, Australian, Canadian, and American. But to be honest, the fee structure was so much high, so I couldn't afford it. Right? Like it was like almost at that time for the I remember the MSc in endodontics, 25,000 per year, 25,000 pounds per year. So that was too much for me. So so I dropped that idea. Okay. Then after 1 year, because I'm a big realistic person, so I decided immediately, okay, that's not my job to go in the clinical side. Okay. Then I searched something else along with one of my friend also, like he's in UK as well. So we searched different subjects, and we explored new subjects. At that time, health informatics was a new subject in dentistry.
Yeah. right? So we both of us we applied in University of Bath, and we got the admission. But somebody told us at that time, oh, there is no future of health informatics in Pakistan. Okay, so you will waste your time or energy and money, everything. सर अब तो बहुत लेकिन स्कोप है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का इन द अब बहुत स्कोप है, लाइक जनरली. मैं I'm talking about 2001. या. ठीक है, वो उस वक्त we were very much me and डॉक्टर खुरम अली खुरम. डॉक्टर अली खुरम, हम राइट? यू टॉकिंग अबाउट डॉक्टर yes अली खुरम, राइट? yes या. I'm talking about we were friends and we were class fellows, so ओके. we decided okay, let's go to health informatics. ओके. We got the admission in University of Bath. Okay, but that time like लोगों ने कहा जी पाकिस्तान वापस आओगे तो या. कोई फ्यूचर नहीं है ये वो, so we dropped that idea. So again, because I was also involved in a teaching, I joined one of the private institute in Islamabad Medical and Dental College. So then I realized that okay, forget about the clinical thing. What should I do? So I explored one thing, that the basic sciences in Pakistan, there's a huge gap, या. right? आई डोंट नो आपको डेंटल मटेरियल्स किसने पढ़ाई, लेकिन हमें जिन लोगों ने डेंटल मटेरियल्स पढ़ाई थी वो डेंटल मटेरियल्स पर्सन नहीं थे, सर वो हमें डॉक्टर ऑपरेटिव सलमान डेंटिस्ट. अजीज ने पढ़ाई है, सो ही इज हाँ चलें, सलमान सलमान तो लाइक डेंटल मटेरियल्स का है, लेकिन जब हम लोगों ने की थी तो उस वक्त हमें जो प्रोस्थेटिक्स वाले या ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री वाले लोग जो है वो हमें पहले डेंटल ऐसे मटेरियल्स होता था. पढ़ाते थे, तो स्पेशलिस्ट नहीं थे, बट दे वर स्पेशलिस्ट इन प्रोस्टोडोंटिक्स और इन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, बट दे वर नॉट स्पेशलिस्ट इन डेंटल मटेरियल्स. ओके. So then I decided, okay, this is the area जहाँ पे अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं है. Okay, so I should go in this thing, ठीक है. right? So then I explored different universities, and then that's how I ended up in Queen Mary University of London in 2004. 2004. And So how was that was that experience of like studying the at main. Queen Mary? Sorry. How was that experience of studying at Queen Mary for a year? Oh, that was one of the best experience, to be honest. Like in Queen Mary, to be honest, the first time I learned what is actually the education system is. All right, and that because there's a huge difference in Pakistani education system or in British education system. Though we follow that system Yeah. in theoretically, but practically there's a huge difference. Yeah. Okay, so first time I realized like how to like study बुक्स को कैसे करना है, लिटरेचर सर्च कैसे करनी है, लाइब्रेरी का यूटिलाइज कैसे करना है, Yeah. जो और फिर जो टीचर्स का एक्चुअली जो एटीट्यूड है, दैट मैटर्स. ओके, Lot. देयर वाज नो स्पून फीडिंग. It Yeah. was not like this that my supervisor she was available like 24/7. No, it wasn't like this. We had meeting like once a week, but जो वो एक मीटिंग होती थी, इट वाज सो मच प्रोडक्टिव. और वो मुझे एक टास्क मिला होता था कि आई हैड टू गो Yeah. और आई हैड टू डू दोस थिंग्स. तो वो एक जो डिफरेंस है, दैट वाज ह्यूज डिफरेंस, एंड आई लर्नड अ लॉट, एंड दैट्स हाउ आई स्टिल प्रेज द इंटरनेशनल और द फॉरेन education system compared to Pakistani education system. System. Yeah. All right. Perfect. So that's a beautiful journey of yours going to Queen Mary. But let's talk about your PhD then. You started your PhD almost immediately after getting out of your master's. Firstly, tell us if it is easy to get PhD opportunities after doing an MSc in the UK. And secondly, why did you decide to do a PhD? Okay. First, how I got admission in PhD, again, luckily or fortunately, I got distinction in MSc. Okay. Because to be honest, that was the first time after dentistry, like मैंने कुछ चीज interest से पढ़ी है, ठीक है, Okay. right? Or it's not like this. I got a distinction without anything. I put a lot of effort, right? I worked like जो भी मुझे task मिला, I did like I still remember. I finished all my experimental work like almost 2 months before the deadline. Oh. Okay, and in last 2 months, I just worked on my thesis and presentations and all other things. Okay, so luckily I got distinction. And in 2005, actually, that was the last time जब UK जो था वो
फॉरेन नेशनल, नॉन यूके एंड नॉन ईयू स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देता था। ओके। ठीक है, 2005 के बाद उन्होंने जो है वो ये चीज बंद कर दी थी। तो we were in that last batch, luckily. So they right after my embassy, so they offered me scholarship for PhD. Okay, then why I entered into PhD? To be honest, like first time when I was going for my MSc, the plan was like this. Okay, मैं MSc करूंगा, मैं वापस आऊंगा और मैं किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाऊंगा। लग जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, that was the aim. लेकिन जब मैं when I entered into MSc and I went through that education system, so मुझे then I realized that MSc is nothing, ओके। right? If you want to be in research or if you want to be in academia, या, यू okay, बी ए so पीएचडी। MSc is nothing. It's just the first step, या। ओके। okay? So I considered it as a first step, okay? And I thought at that time that if I'll not go in PhD, there will be no future, to ओके। be honest, right? And so that's all. And luckily I got the scholarship. So मेरे पास एक वो जो financial या। burden की मेरे जहन में थी वो चीज निकल गई। ठीक है, so then I thought okay, I immediately decided या। कि I should do PhD because PhD से मुझे आगे further फर्दर। research सीखने का मौका मिलेगा। Bilkul, sir. That is that's the perfect answer that I was looking for. I just said after your PhD, you moved to Pakistan to work at ComSats. Now, I know Dr. Salman also used to go to ComSats a lot, and I always used to ask him, "कि आप ComSats क्यों जाते हैं? That's an IT university. Why do you go to ComSats?" And then he used to tell me कि एक professor है, उन्होंने वहाँ पे research center शुरू किया है. तो now I'm talking to the professor. Now I want to talk to you about how was that experience of setting up a dental materials research center, and how did this unique opportunity come your way? Okay, you are asking about the center, the research center at ComSets. Yeah. Okay, at that time it was ComSets Institute of Information Technology. Now its name is ComSets University Islamabad, Lahore campus. Okay, and there is the research center, interdisciplinary research center in biomedical materials. Okay, to be honest, like I always considered that center as the success story of Pakistan. Okay. Okay, if Wow. you want to show few things from Pakistan, like आप present करते हैं ये पाकिस्तान की success stories हैं, Yeah. ठीक है? So in academia, I would easily say that you can present that center. Okay. Okay, how I enter in why I joined? Actually, I was very much involved with that center during since my PhD time. The Okay. reason is because the you can say the executive director or the first executive director, still he is the executive director, was my PhD supervisor, Professor Abdulrahman. Okay. Okay. Again, so I was his PhD student at Queen Mary. And again, I don't know like you have time or not. Otherwise, I will tell you Still, like the we story have of enough time. Don't worry about the time. If you have time, like I have time. okay, like if for the story of IRCPM is very interesting. Mhm. You know what? Right now it is in ComSets University. Mhm. What was the initial plan? The initial plan was that this research center should be in some dental college. Oh, okay. Okay, Yeah. right. And in 2005, and at that time, like there were multiple meetings of Professor Shamur Rahman with some of the owners of Pakistan-based dental institutes. Mhm. Okay, but somehow it didn't work. It didn't work out. Okay, then it moved to some public sector universities of Lahore and Islamabad, and there were multiple meetings with their rectors and with their vice chancellors, but somehow again it didn't work. Okay, मैं यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लूंगा, ठीक है, Obviously, sir, for obvious reason. ठीक Yeah. है, but like it was like this. Then finally he got a chance to meet the rector of that time rector of ComSets, Dr. Junaid Zedi. Mhm. So Dr. Junaid Zedi was a visionary person, so he realized that thing. And then he said, okay, we'll give you the space. We will provide you the whatever the logistic support you need. Open this research center. But this research center should not be in Islamabad. It should be in Lahore. Okay. Okay, because he thought that
because you have to work in connection with industry, Yeah. and the industry is based close to Islam, Lahore, Lahore. either in Lahore, in Yeah, that's true. Sialkot, or That's in true. Gujranwala, Yeah. and there are no industries in nearby in Islamabad area. Yeah. So that's how. Since my like PhD time, so I was involved, with Yes. with this thing. Because we had a discussion with our supervisor related to this circumstances of Pakistan, either it worked or not. So Yeah. that was actually the brainchild of Professor Atishamur Rahman. Okay. So he offered me, like, whenever you do your PhD, Hmm. so if you want, you can join that center, right? uh, Again, when I came back in 2010, uh, so initial plan was that I wanted to be settled in Islamabad. Okay, like मेरा घर वहाँ पे था, मेरे Wow, parents वहाँ पे थे. yeah. ठीक है. So then, but I didn't want to go in any dental college because I knew all dental colleges. Okay, Yeah. they were my friends, they were my colleagues. I worked with them. तो आई रियलाइज कि अगर मैं पीएचडी करके किसी डेंटल कॉलेज में चला जाऊंगा तो Hmm. मैं क्या करूंगा Yeah. प्राइवेट डेंटल कॉलेज में. ठीक Yeah. है. मैं मैक्सिमम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को लेक्चर दूंगा. Yeah. Makes ठीक है. sense. Makes sense. आई कुड मैं रिसर्च नहीं कर सकता. और Research. अभी भी मैं आई थिंक अगर आप अब आज उस साल चीज को 15 साल हो चुके हैं. Yeah. अगर आप उस चीज को आज भी देखें तो जो लोग वहां पे हैं वो सिर्फ यही कर रहे हैं. Yeah, that's true. वो सिर्फ That's एक right. सेकंड ईयर के स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे हैं. Yeah, वो that's रिसर्च का ना ही कल्चर डेवलप हो सका अनफॉर्चुनेटली. सो आई डिसाइडेड कि ये तो मेरी पीएचडी जाया हो जाएगी. hmm. ठीक है. Yeah. सो देन आई डिसाइडेड दैट आई शुड ज्वाइन some research center instead of going to any Makes dental sense. college. Okay. Okay. So then Fair up. I had a discussion with my supervisor. He said, "Okay, if you want, you can move to Lahore." So that's how I joined IRCBM. Wow. Again, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है. It was the best decision. Yeah. I went back to Pakistan. Although after my PhD, I stayed there in UK. I got PSW, post study work visa. Okay. ठीक है. But I decided that I should go back to Pakistan Yeah. and work there. So that's how I entered in that center. Perfect. So you clearly worked there for around 5 years, and then you moved to become an associate professor at the MOM. How now? First question to you would be that after doing an MSc in the UK or a PhD in the UK, is it easy to get a teaching job in the Middle East? Yeah, how difficult is it, and what are the pros and cons of working in the Middle East? Okay. If you ask me the current scenario, Yeah. work in Middle East. So let me tell you, like, right now, if you have PhD, then you have chance to work in Middle East. If you want to come after MSc, no chance. No chance. All right. That's very much clear. Like, maybe you can go to any remote area, Yeah. right? But after MSc, they are not considering any foreign faculty member. Yeah. Okay, because MSc, after MSc, they give you the only the position of lecturer. Okay, and in Saudi Arabia, they are not giving lecturership to any non-Saudi faculty members. So if anybody wants to come to Middle East, either in Saudi Arabia or UAE or Qatar or Oman or wherever, uh, they should have PhD. They should have a Okay. PhD, and that Oh yeah. and this goes for a PhD from the UK and a PhD from the United States as well. Just Oh, any. no, no, it doesn't matter. It doesn't matter. It Yeah. doesn't matter. Like if you have PhD from any good university, Yeah. okay, and if you have a good research profile or academic profile, Yeah. then yes, right now maybe you can apply, or if there are vacancies, yes, you can get the Okay. position. And what do you think Though about it is in the getting coming though it five is to getting ten difficult. years? What do you think about in the coming 5 to 10 years? What would the job market be like for PhDs in the Middle East? Yeah, this is what I want to tell. Like, Yeah. currently, the scenario is getting changed. Okay, because their own graduates they are coming back. Okay, Oh, and there are limited opportunities for foreign faculty members to get job easily as it was maybe 10 years before. 10 years. Okay, and what I'm uh, like seeing, like in next 5 to 10 years, things would be more difficult.
Yeah. Okay, maybe yes, there will be a chance. So I'm not saying like the 100% there will be no chance. Yeah, There will be obviously. a chance, but limited opportunities. And All right. only like if you have a good profile, Yeah. okay, like it's not like that, because you see like now everybody is getting FCPS, okay, Yeah. right? Like maybe 20 years before there was something, oh, if you have FCPS or if you have PhD, so you'll Yeah. stand No, out somewhere. But now I, everybody has FCPS, everyone has MSc or MPhil, or now PhDs are also growing. So growing. after 5 years, there will be many PhDs. Okay, then if you want to apply, so who will get the chance? The one who has better Very research good profile or updated academic CV. profile or some All right. achievements in his or her pocket. All right. Okay. Make sense. Make sense. All right, sir. हमने PhD और आपकी जर्नी के बारे में तो बड़ी डिटेल में बात की. Now let's talk a bit about research. We know that research is very important in our in post graduation. But वो पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च आप तब कर सकते हैं अगर आपने अंडर ग्रेड में आपको कुछ पता हो रिसर्च का. So you strongly advocated research during your tenure as the president of the PA of the Pakistan Association of Dental Research. मुझे याद है आपने कोविड के दौरान एक वो वेबिनार सीरीज कराई थी डॉक्टर नासिर और डॉक्टर हिना के साथ मिलके. मैंने भी वो ली थी एंड आफ्टर दैट आई हैव आल्सो पब्लिश्ड 4 आर्टिकल्स सो फार. ऑल्दो वो इतने हाई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है बट स्टिल आई हैव वर्कड ऑन देम. सो मैंने भी रिसर्च उधर से ही सीखी थी उस वेबिनार सीरीज से और उसी से मुझे थोड़ी बहुत जो रिसर्च आती है दैट हैज़ रियली हेल्प मी. पहले तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इज रिसर्च ड्यूरिंग आवर अंडर ग्रेड ईयर्स. अंडर ग्रेजुएट्स के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? Right. Okay. So there is no second thought in this. Either it is important or not. It is important. Okay. Even at an undergrad level. Okay. Why? Okay. Why is it important to do research? Because very simple answer. Because it's not only like increase your academic, the Yeah, credentials or something like this, but it improves your critical thinking abilities. Okay, absolutely. and which is important, and it bring you to that thing like you can think out of box, Mm. which is not normal or Yeah. conventional or contemporaries. Okay, very simple question, like you are in Pakistan, Mhm. right? Right after graduation, almost 9, if not 90%, let's say okay, 75% graduates, they want to do FCPS. Yes, sir. Yes, Yes. let's say like this. Yeah. After doing FCPS part 1, Mhm. you have to go in the part 2 attachment. In part 2 attachment, you have some extra points. What are these extra points? If you have some publications, right? Yeah. If you have something in your pocket. Yeah. Similarly, if anybody wants to go to get admission for DDS or national after doing the national boards, right now वो भी उस चीज को वेटेज दे रहे हैं कि किसकी पब्लिकेशंस की हैं, पब्लिक आता है एब्सोल्युटली. किसने रिसर्च की है. ठीक है, अगर आपने रिसर्च की है, सो दे गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सो दे कंसीडर यू. वेरी सिंपल, लाइक देखिए मेरे पास एक एप्लीकेशन आती है 10 ग्रेजुएट्स की, तो मैं उसमें क्या चीज देखूंगा? सबने बीडीएस किया हुआ है, या सबने एफसीपीएस पार्ट 1 किया हुआ है. या तो मैंने अब वो सीवी देखे क्या किस चीज को करना है, तो मैं ये देखूंगा इसने किसने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, किसने रिसर्च की किसने हुई है, रिसर्च की है. कौन किस में इन्वॉल्व रहा है. ठीक है, एक तो पहली चीज तो ये फ्यूचर के लिए wherever you want to go, either you want to work in Pakistan or you want to go abroad. Similarly in Saudi Arabia, यहाँ पे right like third year or fourth year के students जो हैं heavily involved in research because they want कि अच्छा इन्होंने अगर यहाँ पे सऊदी बोर्ड देना है, एग्जाम देना है, या बाद में अगर कोई फेलोशिप में एडमिशन लेना है या बाहर जाना है, तो उसमें इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं. ओके. तो अंडरस्टूड. बिफोर like going out of this internship or house job, हर यहाँ पे ग्रेजुएट की कोशिश होती है कि उसकी पॉकेट में एक या दो पब्लिकेशंस हों. या ठीक है, एक तो ये तो एक चीज हो गई जो कि मटीरियलिस्टिकली आप उसको कह लेंगे, या आपको जरूरत है या रिसर्च की. ठीक. सेकंड चीज जो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज मोर इम्पोर्टेंट, जो मैंने पहले कहा था कि इट इम्प्रूव्स योर एबिलिटीज. ठीक है, आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस की एक ट्रेनिंग देता है. ठीक या है, आप ऐसी चीजें सोच सकते हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं फ्यूचर में. और टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं डेंटल मटीरियल्स में हूँ, मैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में भी इन्वॉल्व हूँ. After doing research in dental materials, it helped me in my clinical dentistry. या
because you're बिकॉज dealing नाउ आई with नो कि material. मुझे कौन सा मटेरियल यूज करना है। मैं ब्लाइंडली किसी XYZ कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सप्लायर हैं उन पे मैं रिलाई नहीं करता। That's true. ठीक है, आई रिलाई ऑन माई ओन। Hmm. और जो एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री कहती है Hmm. कि मुझे कौन सा फिलिंग मटेरियल यूज करना चाहिए, कौन सा बॉन्डिंग एजेंट यूज करना चाहिए, कौन सा इंप्रेशन मटेरियल यूज करना चाहिए। ठीक Yeah. है, मतलब कि थिंग्स लाइक दिस। सो इट इज इम्पोर्टेंट। और एकेडेमिया में आई थिंक ये तो मैं बड़े अरसे से जो है पिछले 10 साल से ही कह रहा हूँ कि एकेडेमिया में इफ यू आर नॉट डूइंग रिसर्च प्लीज लीव दिस जॉब। Hmm. Yeah. ठीक है, लाइक आप एक देखिए, अब अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स जो पब्लिश हुई आज से कोई 10 साल पहले, 12 साल पहले पाकिस्तान में, वैसे ही उसका नया एडिशन आते आते टाइम लग जाता है। Yeah. तो इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन रिसर्च, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या नई चीज इन्फॉर्मेशन देंगे? आप वही जो आज से 10 साल पहले की या 15 साल पहले की जो बुक्स में चीजें लिखी हैं वही आप रिपीट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशंस में। Yeah. But if you are involved in research, so if you are in habit of reading new Yeah. articles or research articles or even some good systematic review or meta-analysis, so it automatically improves your academic abilities. और वही चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ, if I'm reading anything, Yeah. Yeah. No, no, तो that मैंने makes अपने sense. अंदर तो नहीं रखनी। इन एनी केस दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, मैंने उसको किसी दूसरे Yeah. के साथ वो नॉलेज शेयर करनी है। सो नॉलेज किसके साथ शेयर करनी है? वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है। Yeah, ठीक that है, does make sense. सो दिस इज माय लाइक वेरी क्लियर All right. आंसर। तो सेम अंडर ग्रेड लेवल पे अगर अगर आप देखें, लाइक हमारा भी ये एक्सपीरियंस रहा। हमने तो तक बिल्कुल भी नहीं की ना रिसर्च, हमें तो उस वक्त तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इवन अब अभी भी आप देख लें, जो लास्ट 10 years में जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड लेवल पे रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं है, एंड इफ दे आर इन FCPS, MDS और MPhil, so how much difficulty they are facing. That is true, sir. That is they absolutely true. So they one thing. cannot they cannot write a single paragraph। Yeah. No, ठीक है, that is. अगर आप उनको सिर्फ एक ये कह देना कि आप एक हमें 250 वर्ड्स का एक लिख के दे दें, एक स्टडी डिजाइन या कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट राइट Yeah, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। makes sense. एंड देन वो एक सर्कल है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट समझता है कि वो नहीं कर रहा, सुपरवाइजर कहता है इसको कुछ आता नहीं है। तो Makes वो sense. एक चीज एक चलती रहती है। Understood. So now you've clearly highlighted the problems. What, in your opinion, is the method to fix this research infrastructure in Pakistan? ये जो research infrastructure है, ये fix कैसे हो सकता है, in your opinion? फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट। Interest. So ठीक I है, know it's a very long answer. Okay, I know it'll tell you हाँ, probably have a lot of things to say, and you can मैं take your time about it. So I would love to मैं talk in detail about this. हाँ, मैं अब उसको उसको डिफरेंट उसमें पॉइंट्स दे देता हूँ, देन अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंग आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट। Interest. डूइंग रिसर्च यू शुड हैव इंटरेस्ट। सेकंड थिंग, यू शुड नो द रियलिटी ऑफ लाइफ। ओके, रियलिटी क्या है इस टाइम पे? Yeah. Okay. Research. रियलिटी ये है कि इफ Yeah. यू आर नॉट इन रिसर्च Yeah. यू डोंट हैव एनी फ्यूचर। आप मे Publish बी or perish. हाँ, वो पब्लिश और पेरिश की वाली चीज अब बड़ी पुरानी हो गई है। पब्लिश एंड फ्लरिश। Publish or ठीक है, पब्लिश एंड फ्लरिश। yeah, sir. ठीक है, तो अब ये है कि अब अगर आपने अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ compete करना है, Yeah. तो एक जो तो ये कुछ चीज है। अच्छा, अब रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसमें वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आर पॉलिसी मेकर्स। Policy. ठीक है, ये चीज हमारे ऊपर से आनी चाहिए। Yeah. ठीक है, अब आइदर वो PMDC हो चाहे वो HEC हो। HEC ने देखें मेडिसिन और डेंटिस्ट्री की तरफ अपना हाथ थोड़ा सा हल्का रखा हुआ है। Yeah, that is true. लेकिन जो HEC का क्राइटेरिया है फॉर अदर यूनिवर्सिटी, बिकॉज द रीजन बिकॉज आई वाज इन कॉमसेट, सो आई नो कि वहाँ पे एक फैकल्टी मेंबर के ऊपर कितना प्रेशर होता है अपने आप को रिसर्च में इन्वॉल्व करने के लिए, अलोंग विद रेगुलर टीचिंग क्लासेस। Yeah. तो Okay. अब ये चीज जो है, चलें HEC हमारे ऊपर इतनी नहीं है पाकिस्तान में, तो PMDC है। Mhm. PMDC, PMC जो भी, अब आई डोंट नो आजकल वो PMDC दोबारा है। तो अब ये PMDC का रूल्स एंड रेगुलेशन में होना चाहिए कि वो मॉनिटर करें इस चीज को कि जो भी फैकल्टी मेंबर हायर हुआ है किसी भी, चाहे पब्लिक सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, उसने एक साल में इतनी रिसर्च प्रोड्यूस करनी है। करनी है। ठीक है,
सो दैट्स द फन. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो जब चीज ऊपर से रूल आएगा किसी भी कॉलेज में, आप देखें इस वक्त ऑलमोस्ट 98% तो सारे या 95% तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं. ठीक या है. अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वालों को अगर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, वो तो नहीं वो तो जैसा चल रहा है काम वैसे चलाते रहेंगे. या ठीक है. लेकिन अगर उनके ऊपर एक रूल पीएमडीसी ने अप्लाई कर दिया कि नहीं, आपके फैकल्टी मेंबर्स हमें हर साल ये रिपोर्ट सबमिट कराएं, या ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज आएगी और फिर वो इन्वेस्ट करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए. क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए. इट्स नॉट ओनली लाइक आप क्वालिटेटिव रिसर्च तो नहीं करेंगे ना, आपको या कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी करनी है या या क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करनी है. तो एक तो ये चीज है. तो अब ये तो अब वो चीज फिर ट्रिकल डाउन होती है और नीचे आती है, वो फिर हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स पे आएगी. हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स अपने फैकल्टी मेंबर्स को करेंगे. हैंडेबल उसमें अब जो मेन फैक्टर है वो ये तीन मैं कर दूं. फर्स्ट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट सेकंड, यू शुड नो द रियलिटी ऑफ लाइफ. या ठीक है. आप कहाँ खड़े हैं आज, और आपको आपको कहाँ खड़ा होना है आज से आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद. थर्ड इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस policy making फ्रॉम द and पॉलिसी मेकर्स. execution of those policies. Very beautiful answer, sir. एग्जीक्यूशन एग्जैक्ट. I was sure after looking at your LinkedIn profile that I will get very good insights on this question. So I really enjoyed the answer that you've given to this question. Sir, आपने बड़ी interesting, मैंने आपकी जब publications देखी, you've done some very interesting research yourself. Tell us two or three, थोड़ा सा briefly हमें बताएं, 2 or 3 of your main research interests that there have been over the past few years. क्योंकि ऑब्वियसली चेंज होते रहते हैं रिसर्च इंटरेस्ट. जो 2005 में रिसर्च कर रहे होंगे वो आप आज वो तो नहीं कर रहे होंगे, बट हाउ हैव दे, बट आजकल इन द पास्ट 3 or 5 years व्हाट हैव बीन योर मेजर 3 रिसर्च इंटरेस्ट? अच्छा, वन वन मोर थिंग, जो इस सिलसिले में जो आप रिलेटेड योर क्वेश्चन, ओके, पिछले वाला या ऑब्वियसली रिसर्च इंटरेस्ट चेंज होते हो जाते हैं. या ठीक है. रिसर्च इंटरेस्ट डेफिनेटली चेंज होते रहते हैं. ओके. बट अगेन मैं ये नहीं कहूंगा, मे बी आई एम wrong or right, I don't know, people they will decide, but I'm very much focused in my research ओके that my area of research is related to bioactive materials or बायोएक्टिव bioceramics. बायो Okay. ओके And if you go through my research articles, या 90% is related to bioceramics. Either I'm using it in composites or in adhesives or in periodontal membranes, okay, things like this, or injectables for bone defects or regenerative dentistry. But my area of research is bioactive material. And this is what, again, I believe, like in research, if you want to be in research, you have to be focused. You have to develop your strength. It's not like this that one day I'm working on amalgam, next day I'm working on glass ionomer, then, okay, let's publish something on adhesive, okay, then publish on impression material. Like, नो in my मेक सेंस opinion, या it's not a, like, this is my personal opinion, okay. And obviously I had a discussion with some other people and they are agreed in this thing that one should be focused in his or her research, okay. If, develop your strength, whatever. And this is what I also tell my other colleagues in Pakistan and also to my students: develop your one strength. या Like, then people, they ask you and they consider you, and if they want and if they have any difficulty in that area, एट so एरिया they contact you. they contact you, Okay. makes sense, So this is very important for me, to establish your strength yeah, in research. makes sense, Okay. And my this is what I've been doing for the last almost many years now, is research related to bioceramics. bioceramics, Okay. From synthesis point of view, from characterization point of view, and then in applied dentistry, uh, either in vitro or in vivo, okay, whatever. So that's my area. Okay. So this is what I'm working in related to bioactive materials, along with or including or incorporating some antibacterial activities. So this is the area where I'm working. The other field, specifically when you're talking about the restorative dentistry, people, they are working towards the self-healing restorative materials. Okay. The okay, current trend is related to self-healing material. You can okay, produce such type of material which can heal, or obviously which can show some antibacterial and bioactivity, because this is the area where people, they are working. Again, when I entered in this field, right during my PhD,
At that time, it was just beginning in related to dental application. But now it is quite established, and people they are talking about these bioactive materials or self-healing Yeah. materials. All right. Second thing is about the regenerative dentistry. Oh, regenerative dentistry. That's very cool. Regenerative, yeah, regenerative dentistry is currently people they are working for next 5 years. Still, people they will work on it, and this is the area to incorporate. Either from scaffold point of view, from stem cells point of view. Mhm. Okay, people they are working in this area. So regenerative dentistry, either in endodontics or in periodontal or in restorative dentistry, they are talking about these things. Perfect, sir. So clearly, you would have a lot of knowledge about where technology is going in the future. What upcoming technology in dental materials specifically excites you the most? कि अगले 10 साल में ये technology जो है इस field को बहुत change करेगी. What is that technology that excites you the most? Technology, people these days, people they are talking about AI. Yeah, that's Okay, true. People are. it's a fascinating thing these days. In dental materials, there were few papers published in this area. Okay, um, yes, it this is the future, and right now I'm not in that area, but I'm discussing with other colleagues like how dental materials actually work together with AI, Hmm. because when we are talking about synthesis of material, every time we are or we can change our synthesis methodologies. Yeah. Okay, uh, new parameters, new things involved. So I don't know like how AI can affect or Hmm. can cover this area, because suppose I'm giving example like I'm working on synthesis of fillers. Yeah. Okay, and there are almost like hundreds of methods of okay, Absolutely, sir. synthesizing those fillers. Yeah. Okay, even if I include everything and say, Mhm. okay, let's put this thing and for the AI, Yeah. but maybe after 5 years, I'll develop some new technology and develop a new method of synthesizing the thing. Okay, Inshallah. so AI is currently in market. Everybody they are talking about this thing. Mhm. Otherwise, new technologies is digital dentistry. Digital. Okay, and it's already established all over the world. But in Pakistan, specifically when we're talking about Pakistan, there are very limited work have been done so far. People they are working on CAD cams, but it's not very much readily available. Mhm. 3D printers, Yeah, not readily again, available. So politically, sir, import politically, it is हम import भी नहीं कर सकते 3D printers without. exactly. Recently, one of my collaborator, my colleague, she purchased 3D printer at IRCBM, Okay. and if I'm not wrong, it took almost more than 3 years. Oh my And God. after passing through many red tapes, security reasons, Bureau- bu- multiple things have been Bureaucracy, involved. bureaucratic tapes, yeah. So how can we compete with the world? So Yeah. I don't know, like people, those who are sitting in the, at a higher level, they Yeah. have to think about these things. Unless until we develop our own 3D printers, okay, हाँ। सर मेरा indigenously, भी एक ना and say, स्टार्टअप एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया आया था मुझे एक दो साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई वाज टॉकिंग टू अ प्रोफेसर आई डोंट रिमेंबर हु आई टॉक टू बट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया केम टू मी एंड आई थोड़ी रिसर्च की मैंने उसके ऊपर तो मैंने कहा इसके लिए 3D प्रिंटर चाहिए होगा अब 3D प्रिंटर जब हमने सोचा तो हमें पता चला जी वो तो आ ही नहीं सकता man, पाकिस्तान में वो तो आने में ही इतना टाइम लग जाता है इतना वो होता है बस फिर वंस अगर आपका बिजनेस करना ही इतना मुश्किल है या सेटिंग अप अ कंपनी और जस्ट वो रॉ मटेरियल ही इतना मुश्किल है तो फिर लोग कैसे कंपनी या एक बिजनेस कैसे रन करेंगे सो यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट exactly. और अगर आप इवन इन डेंटिस्ट्री में देखें, पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट 3D डेंचर्स और 3D यस क्राउन्स सर और एवरीथिंग. Okay. यस अब यहाँ पे भी या लोगों ने अपने क्लिनिक्स में रखे हुए हैं. या एग्जैक्टली या People they are interested because dentist क्या चाहता है, they want to save time, okay, और and with good result, या okay. वो उन्होंने अपने क्लिनिक्स में रखे हुए हैं. दे आर इन्वेस्टिंग ऑन दीज थिंग्स लाइक लोगों ने जैसे कैट कैम या जो चीजें जो आप अपने क्लिनिक्स में रख ली हैं, या उनके कौन लैब लैब को भेजे, या राइट. तो अब हम इस लेवल पे कब पहुंचते हैं,
5 चले years, सर, 10 years. So, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर हाँ पहुंच जाएंगे एक दिन। हाँ, सर, लेकिन with this we'll be moving towards the end of our interviews. The last दो तीन क्वेश्चन मैं पूछूंगा. If someone like me, a fresh graduate, or someone who's in final year of their BDS, completing their undergraduate studies, what should the mindset of a young dentist be? In a modern day dentist का एक mindset क्या होना चाहिए? बहुत briefly एक दो लाइनों में अगर आप बता सकें. देखिए, now developing a mindset is very easy, to Hmm. be honest. The reason is because so much information is available. That's So true. much information is available through social media. That is true. First thing, choose correctly your social media. Okay. That is true, sir. Be on, मैं हर डेंटिस्ट को जो मुझसे पूछता है मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम तो सही है बट बी ऑन लिंक्डइन, यूज लिंक्डइन, यू लिंक्डइन इज वेरी Exactly. इंपॉर्टेंट. यस No, सर, even एब्सोल्युटली. if you are on Insta or if you are on Twitter, there are so many pages or so many contacts, like people they are talking about dentist. If you are talking about dentistry, okay, people they are presenting their cases. People they are talking about the new innovations in dentistry. Okay, so just get in contact with them. Okay, so तो mindset तो अब जो है बड़ा easily इसलिए develop हो सकता है कि आपके सामने picture जो है बहुत हद तक clear है. Everything is just on your one click. देखिए, इट्स जस्ट द थिंग कि आप वो क्लिक किस साइट पे जाके करते हैं. किस साइड पे ठीक है, जाके करते हैं. या ठीक है. तो अब उसमें जो जो भी मैंने पहले बात की कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, दे शुड नो द रियलिटी ऑफ लाइफ. दिस इज फॉर मी लाइक इट इज इम्पोर्टेंट. यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर इन योर रियलिटी. थिंकिंग. ओके, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. ओके, लाइक मैं अगर शेयर माय एक्सपीरियंस, I'm not, I don't know, I'm praising myself, but from the very beginning, okay, I was very much focused. ठीक है, मैं बहुत क्लियर था चीजों के उसमें कि अगर मुझे क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में नहीं जाना, मैंने उस पर टाइम ही नहीं ज्यादा स्पेंड किया. यस सर, एब्सोल्युटली, मैं दैट्स अब वेरी इंपॉर्टेंट. 4 साल लगा रहा हूँ, 5 साल लगा रहा हूँ इस उसमें कि जी मुझे पता है कि मैं नहीं जा सकता. या ठीक है, व्हाई शुड आई स्पेंड टाइम ऑन दैट. फिर ऑल्टरनेटिव है ना, आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान ए, प्लान प्लान सी बी. होने चाहिए. सर, यस. प्लान, ठीक है. प्लान बी क्या था? बेसिक साइंसेस. बेसिक सर. बेसिक साइंसेस में उस वक्त देन आई रियलाइज ओके, ओरल पैथोलॉजी में खुरम ऑलरेडी जा चुका है. हाँ, एक दो लोग और जा चुके हैं. मैं डेंटल मटेरियल्स में जाता हूँ. एंड सर डेंटल आपके मटेरियल्स कोई बाद नहीं. many people went into dental materials after you. So many people went into dental materials because I think you went in 2003, 2004 to sorry 2004 to 2005. After this, Dr. Salman, Dr. Saad, Dr. Sharik, and so many other dentists that I know went into DM. So clearly, yes, आपकी plan A, plan एक्चुअली B बनी. वी वर 8 एट इन दैट बैच. Okay. ओके, जो हम लोग गए उसमें से काफी जो है पाकिस्तान में आगे वापस डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हैं. ठीक है, तो वी वर 8 उसमें से. मैं, मुझे और डॉक्टर सरोज इज इन क्वीन मैरी. हम दोनों ने इमिडिएटली पीएचडी स्टार्ट कर दी थी. Mhm. बाकी उनमें से कुछ पाकिस्तान आ गए, फिर वो दोबारा नेस्ट के स्कॉलरशिप पे पीएचडी करने गए. फिर 1 साल के बाद कोई और फिर गया स्कॉलरशिप करने. तो इस तरह वो हम सारे जो उसमें थे, तो हम लोगों ने मी, सरोज, डॉक्टर कलीम, डॉक्टर शहाब, Yeah. डॉक्टर अंबर, बिल्कुल. we did PhDs in dental materials. Dr. Yawar, he changed his field. Now he's PhD in medical education. Yeah, Dr. So Yasir Hayat Khan, right? Yawar. So we all of us we were together. तो Okay. हम सारे जो थे हम लोग इस फील्ड में रहे. तो जो आपका जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो द यंग ग्रेजुएट दे शुड बी वेरी मच फोकस्ड. ओके, आई डोंट नो आजकल जो आप लोग जो अंडर ग्रेड्स फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में हैं, उनको इस तरह की कोई लेक्चर्स एट एन अंडर ग्रेड लेवल पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, जो फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ या अब तो देर फ्यूचर काफी प्रोस्पेक्ट्स के इस पे बारे में. जोर दिया जाता है करियर काउंसलिंग पे, एटलीस्ट सीएमएच में हाँ, कि और एलएमडीसी एफएमएच में. आई नो जो मेन डेंटल कॉलेजेस हैं लॉ, उनमें तो काफी इस पे जोर दिया जा रहा है करियर हाँ, काउंसलिंग पे. यस. तो उसमें उसमें हर देन इफ यू नो योर सर्कमस्टांसेस, या. इफ यू नो यू कैन गो अब्रॉड, go abroad. ठीक है, there is no harm. You want to settle in UK, US, Australia, whatever, और Canada, जहाँ पे भी आप सेटल होना चाहते हैं, you should know कि अच्छा ये आप FCPS is your thing or not. If या. you think that you are not suitable for FCPS, Mhm. do MDS. या. If you think MDS is not your job, do some other thing.
ठीक है, ऑलराइट, तो आपको परफेक्ट ये सर। चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। परफेक्ट सर। ठीक है, जो सर शुरू से ही। आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली हमने जब इंस्टाग्राम पे डाला कि हम आपकी प्रोफाइल डाली और बताया डॉक्टर अब्दुल समद खान को इंटरव्यू करें, सो मेनी क्वेश्चंस केम अप बट टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट केम अप जिनसे मैं आपसे इंसाइट्स लेना चाहूँगा। फर्स्ट वाज कि पीएचडी यूएस अगर आपने जाना हो तो what do you think about the US education system? Is a PhD doing a PhD from US any better than doing a PhD from you Canada, Australia or Europe or UK? इसमें आपका इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर आप थोड़ा सा बता सकें। देखिए, इट डिपेंड्स कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में जा रहे क्योंकि हैं। That's what I thought. right, first thing, like if you want to pursue your career in PhD, so you should see the profile of that university or ranking of that university or ranking of that department specifically. It's Yeah, not only talking about the ranking of the university. Some universities, they have good ranking overall, yeah, but suppose that particular department where you want to go is not very much strong. Okay, or sometimes it happens कि overall university की ranking इतनी अच्छी नहीं है, but first department की 100 में rank, नहीं है, but yeah, that department is very much strong. yeah, That particular department. So you should consider first thing. okay, Okay, comparison between US and other universities or other countries, still I believe that yes, they are quite ahead. mhm, Okay, um, उनकी जो काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, their infrastructure is much better than the other countries based universities. ठीक है, अगेन बट अगेन उसमें मैं पर्टिकुलर नहीं होगा कुछ, yeah, इट अगेन डिपेंड ऑन द इट वेरीज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। absolutely sir, वो आप मुझे जो यूएस का सिस्टम है कंपेयर टू यूके, वो डिफरेंट है। यूके में जो पीएचडी है दैट इज ओनली रिसर्च बेस्ड। research ठीक है, based, वो कोर्स वर्क बेस्ड नहीं है। yeah, कोर्स वर्क हमने एमएससी में कर लिया था। yeah, that's ठीक true, है, और देन वी एंटर्ड इनटू पीएचडी। yeah, यूएस में यूजुअली इट इज 5 years प्रोग्राम विद कोर्स वर्क, बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत डिमांडिंग होता है, बट ऑब्वियसली जो है वो अच्छा उनका सिस्टम। सिमिलरली लाइक अगर आप जर्मन सिस्टम को देखें, मैं जर्मन सिस्टम को आई लाइक रियली लाइक, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो मेरे कोलीग्स थे जिन्होंने जर्मनी से mhm, पीएचडीज की, व्हेन आई हैड एन इंटरेक्शन विद देम, उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग और थ्योरेटिकली दे mhm, आर वेरी स्ट्रांग। mhm, ठीक है, तो अब ये बिल्कुल वेरी कर रहा होता है। अब मैं इस चीज को दूसरी तरफ लेकर आता हूँ कि यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना एक mhm, अलग चीज है, और उस पीएचडी को यूटिलाइज करना एक अलग चीज है। utilize ठीक है, करना, मैं आई वर्क विद पीपल लाइक ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, फ्रॉम कैम्ब्रिज, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ठीक है, और पीएचडीज फ्रॉम अदर कंट्रीज, ओके, जिनको हम शायद अभी समझते हैं कितने अच्छे नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कुछ लोगों के साथ मैंने काम किया जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से करके आए हुए थे, उसके बाद वो आके सारा दिन बैठे ही रहे। makes ठीक है, sense, अब वो दूसरी तरफ एक ऐसे कंट्री से पीएचडी करके आया जो कि बहुत अच्छा कंसिडर नहीं होता इन हाँ, बुक्स, लेकिन वापस आके उन्होंने इतना अच्छा काम किया yeah, it depends on कि what अपना you are प्रोफाइल doing, यहाँ yeah, से यहाँ पहुंचा दिया। तो ये चीज मैटर करती है। yeah, तो इसलिए अब जो यंग ग्रेजुएट्स इफ दे वांट टू कंसिडर कि किस कंट्री में जाना चाहिए, पहली चीज कि वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें, yeah, उस डिपार्टमेंट की रैंकिंग देखें, वो किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं ये देखें, और एंड देन अपनी फाइनेंशियल्स भी देखें बिकॉज ओ यूएस इज यस, कैटेगोरिकली सो मोर वो तो एक्सपेंसिव। वो 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 तो मैं समझता हूँ पहली चीज आपको पता होनी चाहिए Yeah, आपके that's true sir, फाइनेंस, आपके में कितने पैसे आपके पेरेंट्स ने देना है या आपने स्कॉलरशिप लेना है। yeah. आई डोंट नो आप उस स्कॉलरशिप पे आपका क्वेश्चन है कि नहीं है, बट Sir, ये एक चीज मैं, please tell us more about scholarships because we keep getting questions about scholarships so much और लोगों को लगता है कि डेंटिस्ट्री में scholarships होती नहीं है, बहुत कम है, जीरो हैं, so please tell us more about scholarships. देखिए एक चीज जो अगेन हमारे यंग ग्रेजुएट्स को करना चाहिए, दे शुड रेगुलरली विजिट द एचईसी वेबसाइट। Okay, ठीक है, क्योंकि अब जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए, वो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही वो थ्रू एचईसी हैं। through HEC, अच्छा, बिल्कुल sir, ऐसी बात है, yes sir, ऐसी अब बात चाहे आप वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की बात कर लें, आप वो कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप की बात कर लें, है, वो आप इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्कॉलरशिप की बात कर लें, या
कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री से स्कॉलरशिप आ वर्ल्ड रहा है, बैंक की जापान सर, से स्कॉलरशिप, वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, सबकी थ्रू एचईसी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है। अब ये जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, द वर्क थ्रू एचईसी। पहले ये होता था, आई रिमेम्बर लाइक आज से 10-15 साल पहले, कि आप डायरेक्टली इनको अप्लाई करते थे और डायरेक्टली आप अपना जो है वो, इफ गेट सक्सेसफुल तो आपको मिल जाता है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि हर चीज जो है वो एचईसी के थ्रू होगी, विच इज गुड, या। ठीक है। तो एक चीज ये कि एचईसी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें, ठीक है। वहां पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। और जो देखें डेंटिस्ट्री में, यस, क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में स्कॉलरशिप्स नहीं है, उसकी रीजन है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स, फीस या इट्स स्ट्रक्चर क्लिनिकल इतना, बेस्ड फील्ड, या। हाँ, हाँ। लेकिन बेसिक साइंसेज में, जितनी भी हमारी बेसिक साइंसेज हैं जो डेंटिस्ट्री की, उन सब में जो है वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और हमारे काफी लोग जो हैं वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गए हैं, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स पे गए हैं। वो एचईसी का एक है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, विच इज वेरी गुड। और मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स जो हैं या। जिन्होंने एमफिल डेंटल मटेरियल्स किया, उन्होंने वो अचीव किया फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड दे आर नाउ डूइंग पीएचडीज इन डिफरेंट कंट्रीज, इन ऑस्ट्रेलिया और इन यूके। तो ये वाली चीज, स्कॉलरशिप्स की तो अवेलेबिलिटी जो है ना अब है, लेकिन अगेन उसमें आपका प्रोफाइल मैटर कर। अच्छा होना चाहिए, या। मैटर करता है। ये अगेन मैं बार बार उस चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, या। अब मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला और वो कर रही हैं पीएचडी, बल्कि एक ने तो ऑलमोस्ट खत्म भी कर लिया है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर कुछ और मेरे हमारे साथ जो रिसर्च एसोसिएट्स थे, जो नॉन डेंटिस्ट भी थे, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे गए। लेकिन उन सबको जब वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और उनके जब इंटरव्यूज हुए, वही वाली बात है, देखें, या। पीडीएस सबने किया हुआ है, या। एमफिल भी अब सबने किया हुआ है जिसने या। अप्लाई करना है। बाद में क्या चीज मैटर स्टैंड कर रही आउट है, फ्रॉम बाद द में मैटर क्राउड। कर रही है, हाँ, यस। बाद में मैटर कर रहा है कि उन्होंने और क्या क्या रिसर्च की है, कितनी पब्लिकेशंस हैं, बिल्कुल सर। वो पब्लिकेशंस किन जर्नल्स में हैं, वो एक्स्ट्रा फंडिंग उन्होंने कहीं से, अगर किसी उसमें एस को पी आई, इफ नॉट एस पी आई, वहां पे कहाँ इन्वॉल्व है, अपना सोशल नेटवर्क, आप कम्युनिटी सर्विसेज कितनी कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ट्रू। दिस इज वेरी, मैं एडवोकेटिंग दिस थिंग कि वन मस्ट or should involve in community services, कम्युनिटी। and foreign universities they consider these things। या। मेरी बिल्कुल तो भी हमारी एक कुलीग हैं जो पाकिस्तान से थी, और उन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलर्स पे एमएससी किया, नॉट शी डिड पीएचडी वहाँ पे फैकल्टी प्रोग्राम में, क्लिनिकल ओरल पैथोलॉजिस्ट हैं, ठीक अच्छा। है। तो परसों भी उनसे भी बात हो रही थी, बिकॉज शी वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विसेज। और मैं उसको यही कह रहा था, मैं जब 2015 में मैं मेरी अमेरिका में कुछ लोगों से बात हो रही थी, मैं गया हुआ था, तो हर कोई मुझसे उसके बारे में पूछा था, क्यों, उसके प्रोफाइल में था कि उसकी वो कम्युनिटी सर्विसेज करती थी, वो एक ऑर्फन हाउस में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो वहां पे यूनिवर्सिटीज जो हैं इस चीज को इसको बहुत देखती हैं। बहुत कंसिडर करती हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखती, वो ये देखती हैं कि अच्छा, ये हम इसको हायर कर रहे हैं एज ए पीएचडी स्टूडेंट या एज पोस्ट डॉक्टरेट, हम्म, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल को कहाँ से आगे लेके जाएगा, ठीक है। ठीक है। सर दैट ठीक है। इज तो दैट इज अ वेरी वेरी। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली जो अभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं स्टूडेंट्स, दे शुड इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज, दे शुड गेट सर्टिफिकेट्स, या। ओके, ओके। 2 नंबर सर्टिफिकेट्स नहीं, लेकिन प्रॉपर सर्टिफिकेट्स के साथ, ठीक है। आपके सीवी में ये चीजें मेंशन होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल योर सर। सीवी बिल्कुल शुड बी बिल्कुल। स्ट्रांग। Yeah, that's brilliant advice, sir. I'm so glad we went into this. Sir, second last question to you. If someone wants to collaborate with you on a research, what should they do? ये Instagram पे किसी ने सवाल किया हुआ था कि not just you. What he meant was कि any internationally acclaimed researcher किसी को approach करना हो, how should they go about approaching someone, or how should they collaborate internationally with someone on research? ओके, देखिए, कोलेब्रेशन अगर आपने करनी है, सपोज मेरे साथ करनी, राइट, मैं, तो आप, सपोज आपने अगर करनी हो, तो आपने अगर मेरे साथ रिसर्च करनी हो, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप कि आप मेरा रिसर्च प्रोफाइल देखें, रिसर्च प्रोफाइल देखेंगे, बिल्कुल ठीक सर। है। अब अगर मेरा रिसर्च प्रोफाइल आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है, तो अब आप मुझसे कांटेक्ट करें, जी। ठीक ठीक। है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप काम करना चाहते हैं प्रोस्टोडोंटिक मटेरियल्स पर, जी। सपोज, ओके। अब मेरे रिसर्च प्रोफाइल में प्रोसेस। प्रोस्टोडोंटिक मटेरियल नहीं है, इतना इतना नहीं है, ठीक है।
कुछ हमने अगर कुछ काम थोड़ा बहुत किया हुआ तो किया हुआ, या इतना नहीं है, ठीक है। या तो अब अगर आप जब मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं कहूंगा अच्छा मेरी तो ये फील्ड नहीं है, हम्म तो मैं आपको कहूंगा कि नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे रिसर्च इंटरेस्ट मैच नहीं अच्छा करते, करते हैं, ऑलराइट। ठीक है। तो जो मेरा रिसर्च, तो इट एप्लीकेबल टू एनी अदर रिसर्चर। अगर आपने हम्म किसी भी और से भी कांटेक्ट करना है तो यू शुड फर्स्ट सी हिज मैच और ऑफ हर रिसर्च रिसर्च इंटरेस्ट। प्रोफाइल। हाँ, और फिर आप देखेंगे आपने अपना रिसर्च, आपका रिसर्च इंटरेस्ट उससे मैच करता है कि नहीं करता। जब वो मैच करेगा देन यू कैन कॉन्ट्रैक्ट, ओके। देन जब आपने कोलेबरेशन करनी है, कोलेबरेशन इज व्हाट, कोलेबरेशन इज वन थिंग, वर्किंग अंडर Working सुपरविजन under इज supervision is सेकंड, another thing. Yeah. ठीक है। कोलेबरेशन क्या होती है, कोलेबरेशन होती है गिव एंड टेक, Give and take. Yes. Okay, I ठीक है। understand. Yes. Yes. अच्छा, आप मेरे साथ कोलेबरेट करना चाहते हैं, मैं ये देखूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और आप मेरे लिए क्या कर सकते Okay. हैं, Hmm. ठीक है। कहने की ये है ना कोलेबरेशन, Yes. कि Yes. अगर हमने एक प्लान की, स्टडी प्लान की, Yeah. अब मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, इसमें से ये वाला पार्ट तो मैं करूंगा, हाँ. और ये और वाला ये वाला पार्ट अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो आप ये वाला पार्ट मुझे करके दे दें। ठीक है. तो ये होती है कोलेबरेशन, Yeah. ठीक है। कोलेबरेशन ये नहीं है कि आप 100% Yeah. Yeah. मुझसे Yeah. They're एक्सपेक्ट कर obviously. सकते हैं, मैं Obviously. एक्सपेक्ट करूँ कि मैं आपको काम करके दे दूंगा, तो और उसमें फिर हम, आप कहेंगे मैं तो आपके लिए पेपर लिख दूंगा या लिख दूंगी, तो वो ये कोलेबरेशन नहीं है। Yeah. Makes sense. कोलेबरेशन है कि कि आप मुझे क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, Yeah. मैं आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करूंगा। हाँ, वर्किंग अंडर सुपरविजन इज डिफरेंट थिंग। आप ये कहते हैं कि जो आप, अगर मैं समझता हूँ जो आपका जो क्वेश्चन था, इफ इफ दे आर यंग ग्रेजुएट्स, Hmm. तो उनका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम अगर आपके साथ Yeah. काम अंडर करना कैसे काम चाहें, करें? बिल्कुल. अंडर काम करना चाहें, तो वो क्या हो, तो उसका उसका पहला तरीका ये होता है, जो मैं मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखा है अपनी, ऑब्वियसली कुछ चीजों से, Hmm. मैं आपको यानी बड़े, आई डोंट नो, स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देता हूँ, अब कुछ लोगों को सही लगे या गलत लगे। ऑलमोस्ट एवरी मंथ हमें इस तरह की मेल्स आती हैं, बिल्कुल सर, आती होंगी, आई एम ठीक है। श्योर. लोग लोग कांटेक्ट करते हैं और पहला पहला उनका ये होता है कि सर मेरा तो रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, हाँ. ठीक Yeah. है। यानी रिसर्च इज माय एरिया, ठीक है, वेरी गुड, चलें। अब हम जब काम करना शुरू करते हैं तो फिर इधर उधर के हाँ. एक्सक्यूजेज आ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज टू बी ऑनेस्ट मुझे पुट ऑफ करती है Yeah. कि No यार sir, that would आपने put मुझे off कहा कि anyone. आपका इंटरेस्ट है, That would put off ठीक है, anyone. Yes. ठीक है। अब जब मैंने आपको कोई काम दिया, Hmm. अब किसी का उस वक्त लैपटॉप खराब हो गया, Hmm. किसी का इशू हो गया, ठीक, किसी का कुछ मेडिकल इशू हो गया, किसी का कुछ इशू हो गया, ठीक है, हम सबके साथ ये सारे इश्यूज होते हैं, Yeah. ठीक है। लेकिन डिलेज जो होते हैं वो कुछ डेज के या वीक्स के होते हैं, वो मंथ्स के नहीं होते, Yes. Yes sir. ठीक है। Absolutely. अगर डिलेज आ रहे हैं तो वो कुछ, चलें, एक हफ्ते का डिले आ गया, 2 हफ्ते का डिले आ गया, लेकिन अगर डिले में 2 महीने से वो चीज सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो Yeah. इसका मतलब है कि वो फिर नहीं होगी. आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और किसी दूसरे के भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, क्योंकि अब आप इस वक्त रिसीविंग एंड पर हैं, Hmm. दूसरा जो है वो गिविंग एंड पर है। Makes sense. आप इस वक्त एज ए यंग ग्रेजुएट, या मैं भी अपने आप को भी कंसिडर करता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने एमएससी की थी, Yeah. अगेन मैं, हालांकि मेरे मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब एक चीज पे कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि मैं हमेशा देर करता हूँ, अच्छा. जो भी टाइम होगा मैं उस पर नहीं पहुंचता, मैं डिले कर, लेकिन ड्यूरिंग माई एमएससी एंड माई पीएचडी आई डिडंट मिस माई सिंगल मीटिंग विद माई सुपरवाइजर। अगर सुपरवाइजर ने मुझे 9 बजे कहा है तो आई वॉज देर एट 9 o'clock। Yeah. अगर उसने मुझे शाम 4 बजे कहा है तो आई वॉज देर एट 4 o'clock। क्यों? Yes. उस वक्त मैंने रियलाइज किया था, क्योंकि मैं उस वक्त लर्निंग फेज, अगर मैं उस वक्त बहाने मार सकता, मैं तो वहां पे जॉब अपनी करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था मैं No sir. अपने, मुझे स्कॉलरशिप जो था सिर्फ फीस का था, Yeah. मैं अपनी लिविंग के लिए मुझे खुद जॉब करनी थी, मैंने अपने खाना खुद बनाना था, मैंने Yeah. अपना घर खुद साफ करना था, Yeah. ठीक है, वो सारे काम मैंने करने थे, Makes ठीक है। sense. और उसमें बर्फ भी थी, उसमें सर्दी गर्मी जो भी थी, ठीक है। Yes. तो ये चीज एक जो यंग ग्रेजुएट है उसको ये चीज रियलाइज करनी है कि इफ दे वांट टू कांटेक्ट विद एनी वन Any हु sure. इज
स्लाइटली सीनियर टू यू, तो अब आप रिसीविंग एंड पर हैं, वो गिविंग एंड पर है, एंड पर है। आपने थोड़ा सा उसके हिसाब से चलना है। ठीक टेक है, अब अगर मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस हाँ एब्सोल्युटली। जी, अब अगर कोई आप कोई भी इट्स मैं अपनी बात ही कोई भी, और ये हर एक पे अप्लाई होती है, कि अगर वो अब आपको कोई टास्क दे रहा है या और इंटरेस्ट आपने शो किया, या इंटरेस्ट आपने शो किया, तो वो बिल्कुल। टास्क टाइमली कंप्लीट करें। या ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, शुरू में हमने इसी तरह मैंने गलतियां की कि लोगों ने कहा जी कि मैं आपके साथ सर रिसर्च करना चाहता हूँ और ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। ठीक है जी, शुरू हो गया, दरमियान में रह गई रिसर्च। वो गायब। अब वो जो स्टडी थी वो हमारी कहीं दरमियान में ही रह गई, वो कहीं कंप्लीट नहीं हुई। तो अब उसके लिए पहला काम मैं क्या करता हूँ, ओके, लेट्स राइट अ रिव्यू पेपर। ओके, मेक सेंस, हाँ। ओके, तो वो मेरे लिए एक यानी कि ये मैं अपना सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। वो चीज वो चीज मुझे बता देगी कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। मेक ठीक है, सेंस, मेक अब ना सेंस। मुझसे कोई कांटेक्ट करता है, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, लेट्स राइट अ रिव्यू पेपर। उससे मुझे एक तो ये पता चल जाएगा कि आपकी राइटिंग एबिलिटीज कितनी है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, और आप कितना अपना काम जो है वक्त पे कितने करते हो। रिस्पॉन्सिबली काम कर सकते हो, जब बिल्कुल। आप, हाँ, वो एक फर्स्ट स्टेप आप क्लियर कर लेते हो, देन से ओके लेट्स डू सर, सम स्टडी। परफेक्ट सर। ठीक, ओके। तो ये मेरा 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 ठीक मेरी है सर। मेरी ये थिंकिंग है। ठीक है सर। और आई थिंक ये चीज मैंने काफी सारे टीचर्स से जो इंग्लैंड में थे, या उनसे उनसे भी सीखिए। मैंने यही चीज ऑब्जर्व की थी, या और ऑब्वियसली कुछ चीज, हाँ, वो भी ऐसी इसी चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है सर। Sir, brilliant answer. I loved where this conversation went, and I've loved this conversation. Last question to you: what do you think about this startup of ours, and any advice or suggestions that you would like to give us? नहीं, देखिए, वो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग, और आई थिंक वट एवर यू आर डूइंग very beneficial. Obviously, this is thanks to this technology, or and what you did is actually you selected this technology, or you are actually using this technology in a right way. ठीक है, अब दिस जूम फैसिलिटी और ये सारी फैसिलिटीज तो सबके लिए अवेलेबल है, सबके पास है, Yes. लेकिन आपने उसको यूज किया, एंड आई थिंक आई डोंट नो वट एवर you gain out of it, but you are interacting with hundreds of people now, okay, those who are sitting in Pakistan, outside Pakistan. And if you want to be in academia or in research or even in clinical Yeah. dentistry, ये एक चीज जो है, ये आपके प्रोफाइल में आ रही है। ठीक Yes, है, sir. Biल्कुल. सपोज कल को आप अमेरिका में या इंग्लैंड में कहीं पे या कहीं भी कंट्री में अप्लाई करते हो, उसके साथ जिसके साथ आप ऑलरेडी ये एक पॉडकास्ट कर चुके हो, बिल्कुल सर. ठीक है, तो उसको एक इंप्रेशन देगा कि यस, दिस पर्सन Oh, इज एंथुसियास्टिक, yeah. इज इंटरेस्टेड। ठीक है, और ये एक तरह की कम्युनिटी सर्विस होगी ना आपकी। Yeah. ठीक है, Makes. क्योंकि Yeah. आप इस चीज को स्प्रेड Helping कर रहे us. हो, Yeah. ये इंफॉर्मेशन जो है ये स्प्रेड हो ठीक रही है है, सर. सो यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री। Thank you. ठीक है, एंड ऑल्सो यू आर इंटरेक्टिंग विद फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, जो जिनके साथ हमारा जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। Yeah. I know you did podcast with Tucker, I think so, Yes, sir. last year. Yes, Yes, yes. yes, I saw that. तो अब वो चीज जो है, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं या हम लोग उनके साथ जिनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, अब वहां से एक कांटेक्ट मिल गया, ऑब्वियसली, एंड ऑल्सो यू आर एक्चुअली giving a positive sign or positive face of Pakistan. Yeah. Okay, That's true. which That's what I matters a lot. wanted. Yeah, that was my initial Which goal. matters a lot. Yeah. ठीक है ना, कि you are interacting with other nationalities, ठीक है, and you are giving them a positive face of Pakistan. Perfect, sir. Sir, thank you so much. Sir, I've rarely gone above 1 hour with any guest. I think सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है कि मैं 1 घंटे से ऊपर बात की हो किसी से, but ये conversation थी इतनी interesting that honestly it's been 1 hour, over 1 hour 15 minutes, and बिल्कुल पता नहीं चला. Thank you so much for taking time out this conversation. I am sure ये एक पूरा guide होगा for dentists and young graduates out there who want to get into research and who want to pursue research in the future. And so thank you so much for taking time out और इतना डिटेल में सब जवाब देने के लिए. थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, आपने टाइम दिया। मेरे Thanks, मेरे sir. Thank you लकीली so much. मेरे तो क्योंकि ईद वेकेशन चल रही है, तो इट्स इजियर, लेकिन अदरवाइज भी मैं अगर कोई होता तो हम
जरूर करते, क्योंकि मैं स्टिल आई बिलीव कि वही जो मैं भी कह रहा था कि जो आप ये काम कर रहे हो, ये चीज कुछ शायद अगर लोग सुनेंगे, स्पेशली जो यंग ग्रेजुएट सुनेंगे, Yeah, तो वो उनके लिए they'll really benefit अगर from उनमें this. से एक भी, ये चीज मैं अपनी वर्कशॉप में भी कहता हूँ कि जो हम डिफरेंट वर्कशॉप्स कराते हैं, कि अगर उस वर्कशॉप से अगर कोई एक भी, तीस बिल्कुल सर. 35 40 50 लोग बैठे होते हैं, You're कोई एक भी अगर सीख गया ना, तो वही हमारे लिए वो एक तरह का एब्सोल्युटली. वो मेरा एक भी सर मेरी यही अब सद जा रही है। मेरा यही मोटो है कि अगर एक बंदा भी ये पॉडकास्ट देखे, उसको रिसर्च की इंपॉर्टेंस समझ आ गई ना, आवर वर्क हियर इज डन. कि एक बच्चा भी उसको समझ आ गई कि अच्छा यार रिसर्च करनी है, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, उसने देख लिया ये, एंड ही सेज दैट आई वांट टू डू रिसर्च, आवर वर्क हियर इज डन. एंड विद दैट, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड एडवांस में ईद मुबारक टू यू. एडवांस ईद मुबारक। और इफ यू वांट, और कोई भी जो भी सुन रहा है, इफ दे वांट टू कांटेक्ट मी, दे कांटेक्ट मी थ्रू माय ईमेल्स। मेरे ईमेल तो गूगल से भी मिल जाएगा, एंड आई एम ऑल लाइक इन दीज सोशल मीडिया नेटवर्क पे। मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, LinkedIn पे रिसर्च and गेट पे Twitter भी पे हैं, हूँ, बिल्कुल. ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। मैं तो ये चीज यूज करता हूँ। या और उसमें अगेन ऑलमोस्ट 70% ऑफ दीज जो है वो मेरे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, उनको मैं अपने रिसर्च और एकेडमिया के पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने सर, काफी सर इंटरनेशनल लिंक्डइन तो आप कोलैबोरेटर्स वहां काफी से यूज मिले हैं। करते हैं. लिंक्डइन तो यू जी, यूज. लिंक्डइन, ट्विटर, या फेसबुक। if anybody wants to contact, if they want to do research, if they have any question related to research जो मेरी अपनी कैपेसिटी में होगा, तो परफेक्ट सर. अगर आंसर दे सका, तो they can contact परफेक्ट me. सर. परफेक्ट सर. थैंक यू सो मच.